हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लैंगचेन सीरीज। आज के इस वीडियो में जनरली हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बारे में बात करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लैंगचेन। साथ ही साथ वी विल सी दैट एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या था और एक अच्छे प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। वी विल ऑल्सो सी दैट एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में व्हाट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वी हैव, और यूजिंग दोज एट्रीब्यूट्स हम लोग एक प्रॉम्प्ट को डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। So let's start with this particular video. So to start with, let's go through what will be a structure of a good prompt. Okay, so a good prompt का structure should include all these things. Like it should include a role. Role basically, let's suppose अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो LLM को, you need to define a persona, you need to define a role, that what you want an LLM to be. बेसिकली आप एक LLM को क्या चाहते हो, वो एक टीचर बन के आपसे बात करे, या वो एक एजुकेटर बन के आपसे बात करे, या वो एक डेवलपर बन के आपसे बात करे, या वो एक आर्किटेक्ट बन के बात करे. यू नीड टू डिफाइन अ रोल टू दैट. ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट द टास्क डिस्क्राइब वॉट यू वॉन्ट इट टू डू, कीप इट क्लियर एंड स्पेसिफिक. लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ आर्किटेक्चर का डिज़ाइन बनाना है, और वो डिज़ाइन में बेसिकली आई वांट टू जस्ट टू क्रिएट अ लो लेवल डायग्राम, नॉट अ हाई लेवल डायग्राम बट अ लो लेवल और अ हाई लेवल डायग्राम. सो यू नीड टू स्पेसिफाई कि आई वांट टू क्रिएट अ डायग्राम और आई वांट टू क्रिएट अ ड्रॉ डॉट आईओ फाइल. दिस इज हाउ आई वांट माय आउटपुट. सो बेसिकली आपको टास्क क्या क्या करना है, वो पर्टिकुलर रोल में वो क्या क्या टास्क करेगा, यू नीड टू डिफाइन दैट. Similarly, we have another thing that is called requirement. This requirement can include two different things. That first is instructions and other is constraints. So instruction is something, let's suppose if you're writing a essay, and to write that essay you want your LLM to write those essays into three different paragraphs. In the first paragraph you want the introductory system, introductory things. In the second paragraph you want something which is related to some facts, and in the third paragraph you want to conclude that particular essay. Okay, so you need to set those instructions into your prompt, that this is how you want your output. Okay, this is how you want your LLM to respond. Okay, this is the instruction and the constraint. Let's suppose देयर आर मल्टीपल सिनेरियो जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि मेरा LLM कुछ काम ना करे. जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये बोलूँ कि कि मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ, और उस ऐसे में बेसिकली आई डोंट वांट टू इंक्लूड एनी नेम्स, आई डोंट वांट टू इंक्लूड एनी डेट्स, or let's suppose if I don't want to include anything which can hurt someone's religion or someone's sentiments. So you want to add those constraints to your prompt, that your your LLM should not do those things. Okay, and the last but not the least is the output format, like how you want it. Do you want this as a paragraph, do you want the output as a paragraph, or do you want the output as a CSV file, do you want the output as a TSV file? This is all thing you need to define in this particular output format. So basically the main part of a good, to summarize it, the main structure of a good prompt would be, it should include a role, it should include what task and requirement you need to do, it should include the instruction, like how you want your task to be performed. Okay, and the other thing, the constraint, that what you want, what you don't want to do. Okay, let's suppose अगर आप LLM को कुछ स्पेसिफिक काम और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करने से रोकना चाहते हो, you can add it in this particular constraint, and then the output format, that how you want the output. So this is the main structure of a prompt.